Hello students, I'm here with another video from the chapter of class 10th Science NCERT book, that is from the chapter Electricity. Before starting today's video, I would like to tell you all that till now what all things we have discussed in this chapter. So children, we have discussed about the term electricity, which means that it is a property of the charges when it is flowing when it is flowing inside a conductor, and that is said to be as electricity, and also it is known as electric current. Just because that the continuous flow of charges is being maintained inside the conductor, that is why it is said to be as a continuous current. Okay, then after that we have also seen that this continuous current is being maintained by a potential difference. Now what is a potential? Potential means it is a process by which the higher potential, there is a difference between the work done of the charges when it is moving from infinity to that particular point. When the charge has to come from infinity to a particular point, then some work has to be done, and that is said to be as a potential difference. And if we talk about the potential, that is potential, and if we talk about potential difference, it means that both these points, the ends of the wire is being defined. The 2 points are being defined, that from this point till that point a particular charge has to move, and that is known as the potential difference. And this is maintained by putting the electric cell or a battery that is giving continuously, it is supplying the electrons to that particular circuit. Then after that we saw Ohm's law, where it says that Ohm's law says potential difference is directly proportional to the current which is being flowing in that particular circuit. Okay, in fact we have also seen the circuit diagram where symbols have their usual meanings. There we have drawn the symbols also. Then after that solving the numericals of finding out the resistance also we have seen. So resistance is a property of a conductor, it is a property of the current which opposes the flow of these charges. It is the property of any conductor, okay, where the charges are not able to flow. Similarly, if we talk about resistivity, it means that that resistance is being calculated for a particular length and the width of a wire. Okay, so this is known as this type of property is known as a resistivity. Fine, this is known as resistivity. Now resistivity is different for different material. It is more for the alloys, it is more for because alloys have higher resistance. In fact it has higher resistance. It is going to if it has higher resistance, it is possible that the resistivity would also be higher. Okay, then finally we have also seen about the electric power, how it is being generated and how it is being calculated. तो इलेक्ट्रिक पावर को हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके लिए कई सारे फॉर्मूलाज हमने देखे थे. आफ्टर दैट वी हैव आल्सो सीन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन यस्टरडेज क्लास, एज वेयर आई हैव टॉट यू अबाउट द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. ओके, सो वेयर वी हैव स्टडीड अबाउट द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, which says that this Joule's law of heating says that all the work done is directly proportional to the heat, that is the heat generated, or that work done which is being taking place with the current, resistance, and for the time taken, for a particular time the electric current is flowing under a resistance. This is known as the Joule's law of heating. So here H is the work done is being in the form of the heat dissipated, heat generated. So that is directly proportional to the current square, it is directly proportional to the resistance, it is directly proportional to the time till which this is being flowing in the conductor. Okay, H is equal to I square R T. Okay, this is known as I square R T. Fine. Now the next thing, today we will be discussing some numericals based upon this I square RT. Yesterday I have given you one numerical as well, so today also I will continue the same thing. We'll solve some numericals on Joule's law of heating. H is equal to I square RT. So the first question is calculate the heat produced
calculate the heat produced when 96,000 coulomb charge is transferred 96 coulomb of charge is transferred in 1 hour through a potential difference of 50 volts. ठीक है, to a 50 volts. Fine. Now the next what we will do, we will first find out the current. For the solution we can say that I is equal to Q by T. I is equal to 96,000. I यहाँ पर Q दिया हुआ है हमको, टाइम दिया हुआ है for 1 hour, सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देंगे 60 to 60 seconds. Okay, so it becomes I is equal to, if you cancel this, you can get the value as 26.67. This is current, so this is in amperes. ठीक है, this is our current, so it is in amperes. Now what we will do, we are going to study the next point. The next thing what is being to be solved here is we have to calculate the resistance now. क्योंकि यहाँ पे हमें I चाहिए, R चाहिए और टाइम हमें दिया हुआ है, तो I हमने कैलकुलेट कर लिया. For R we will just complete. For R we are going to write down as R is equal to V upon I. ठीक है, R is equal to V upon I. अब पोटेंशियल कितना है यहाँ पे, 50 वोल्ट्स का पोटेंशियल दिया हुआ है, 50 वोल्ट्स अपॉन करंट कितना है 26.67 amperes. 26.67 amperes. So the resistance comes as the value of 1.87 ohms. 1.87 ohms. Okay. अब हम फॉर्मूला में रख सकते हैं इसको. The formula for calculating the heat, H is equal to I square RT. H is equal to I square RT. Now children, we have H, we have I, we have R, and we have time also. So what we will do, we are going to substitute the value of I, that is 26.67 into, this is the square, into R is 1.87, into time is 1 hour. तो 1 hour को आप सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देंगे तो 60 into 60 seconds आ जाएगा. अब जब ये फाइंड आउट, जब पूरा मल्टीप्लाई करके आप ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, द वैल्यू विल कम अप्रोक्सीमेटली लाइक 4,788 और 0.4 किलो जूल्स. दिस वुड बी इन जूल्स. ओके, आप इसको 00 के साथ लिखो अगर तो 488,400 जूल्स. ठीक है, यहाँ पे इतना वैल्यू आ जाएगा 400,4788,400 जूल्स. अब आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे अगर तो कितना हो जाएगा ये 4788.4 किलो जूल्स. H is equal to 4788.4 kilojoules. This would be the answer for your question. So अभी यहाँ हमने कैसे solve किया, H कैसे हमने find out किया, let's see it again. So in solution it says that whatever values are being given, first we'll substitute those values and we will be finding out the missing values first. So for the missing value we will see that what is being given. We have been given about the charges, that is C is being given, time is being given, and a potential difference of 50 volt is being given. So what we will do, we will find out the current with the formula. Current I is equal to Q by T, क्योंकि हमें चार्ज का भी यूज करना है. तो 96,000 upon 60 into 60 seconds, that is I is equal to 26.67 amperes. Okay, then R is equal to V by I, and now potential difference कितना है
50 वोल्ट्स का है, 26.67 से हम डिवाइड कर देंगे, विल गेट द आंसर एज R is equal to 1.87 ohms. Now we'll substitute these values in this formula. H is equal to I square RT. 26.67 square into 1.87 जो R की वैल्यू है ये हमने यहाँ रख दी. 60 into 60 क्यों किया? क्योंकि टाइम 1 आवर दिया हुआ था. तो 1 आवर का मतलब है कितने सेकेंड्स हुए? 60 मिनट्स into 60 seconds. So it becomes 60 into 60 seconds. आप पूरा मल्टीप्लाई करके देख सकते, कैन चेक दिस वैल्यू ऑल्सो एंड यू कैन मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आएगा यहाँ पर दैट वुड बी इन जूल्स. अब आपको अगर हायर वैल्यू में कैलकुलेट करना है तो यू विल डिवाइड दिस बाय 1000 एंड यू विल गेट द आंसर एज किलो जूल्स. ठीक है, द एनर्जी वुड कम इन द फॉर्म ऑफ किलो जूल्स. सो दिस इज व्हाट इज अबाउट योर न्यूमेरिकल which is given over here and you can find out some more numericals and you can solve this. ठीक है, अब यहाँ पर एक और तरीके से एक क्वेश्चन और दिया हुआ है जो कि रेशियो फाइंड आउट करने के लिए. आई जस्ट टेल यू. Okay, so we'll do this question. Question number 2. Two conducting wires of same material, of equal length and equal diameter, and first connected to series in series and then in parallel in a circuit across same potential. The heat produced would be, कितना आएगा आंसर? We'll calculate this. यहाँ पे options दिए हुए हैं, NCERT का ही question ये. But we can suppose now how we will solve this, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो we have to take the length and the breadth of diameter of the wire as x. So what we will do, we'll suppose the resistance of each wire is x. ठीक है, दोनों का रेजिस्टेंस कितना है? x है. अब अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, if these wires are connected in series, x plus x हो जाएगा, क्योंकि दो वायर्स हैं यहाँ क्या है, टू कंडक्टिंग वायर्स हैं, तो एक का लेंथ अगर x है और दूसरे का भी x है, तो क्या कर देंगे हम उसे, x plus x 2x हो जाएगा. तो कितना आंसर आ जाएगा? दिस बिकम्स 2x. ओके, अब अकॉर्डिंग टू वी हैव टू फाइंड आउट दिस इज R इन सीरीज. आप इसको R1 भी बोल सकते हो, R सीरीज भी बोल सकते हो. फॉर दिस यू कैन फाइंड आउट द करंट ऑल्सो. तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? I1 कर लो इसको V by R. ओके, V by R कर सकते हैं. V by R में हमारे पास V की वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा है, तो वी कैन सपोज इट एज V और R की जगह 2x हो सकता है. ठीक है, R की जगह 2x हो सकता है. नाउ इफ हीट प्रोड्यूस्ड, अब इसका हम हीट निकाल ले. करंट हमारे पास आ गया, R हमारे पास आ गया, टाइम हमारे पास दिया हुआ है. ठीक है, तो क्या करेंगे हम, टाइम को भी सपोज कर लेते हैं, टाइम इट एज t. तो अब हमें h फाइंड आउट करना है. h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. आई स्क्वायर कितना है?
I square we have got this. This is I square R1 into T. ये फॉर्मूला बन जाएगा. अब इस फॉर्मूला में हम सारी वैल्यूज रख देंगे. क्या करेंगे? H1 अगर हम फाइंड आउट करें, क्योंकि हमें दोनों वायर्स के लिए अलग अलग फाइंड आउट करना है. H1 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x. अच्छा ऐसे लिख दो अगर 2x स्क्वायर इंटू R1 कितना है? 2x है. इंटू टाइम को अगर हम टाइम ऐसा बना दें, t सपोज कर लें. ओके. नाउ फॉर I2 कितना है? I2 कितना फाइंड आउट करोगे आप? I1 आ गया ये. अब R2 के लिए कर सकते हैं. रेसिस्टेंस 2 कितना निकलेगा? पैरेलल में अगर हम कंबाइन कर रहे हैं किसी भी रेसिस्टेंस को, तो R2 बन जाएगा x/2, क्योंकि 1/x प्लस 1/x करोगे तो क्या आ जाएगा? x/2 हो जाएगा. ठीक है. सो इट बिकम्स x/2. पूरा कैलकुलेट करके जब आप इन्वर्ट करोगे तो x/2 आ जाएगा. ओके. नाउ फॉर दैट वैल्यू फॉर V I2 निकाल लो इसके लिए. ठीक है. R1 ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का. ठीक है. तो इसको दो पार्ट में सॉल्व करना है. R1 हमने फाइंड आउट कर लिया था, R2 हम फाइंड आउट करेंगे, I1 फाइंड आउट किया था, I2 फाइंड आउट करेंगे. तो V अपॉन R कितना है? x/2. ठीक है. इसको ऐसे सिंपल लिख सकते हैं, V इंटू 2/x, V इंटू 2/x. ठीक है. ना H2 कितना आ जाएगा? I2 का स्क्वायर इंटू R2 इंटू T. ओके. अब इसमें कर सकते हैं क्या? H2 के लिए सारी वैल्यूज आप रख दीजिए. H2 में सारी वैल्यूज रखने पे क्या आ जाएगा? I स्क्वायर RT. तो I हमारे पास V इंटू 2/x, V इंटू 2/x का स्क्वायर. ओके. इंटू x/2 इंटू T. इसको सॉल्व कर लो. कितना आ जाएगा? H2 V स्क्वायर इंटू 4/x, V स्क्वायर इंटू 4/x इंटू x/2 इंटू T. ये कट जाएगा, सर कैंसिल हो जाएगा, x से कैंसिल हो जाएगा. इट बिकम्स V स्क्वायर 2 इंटू T. ठीक है. V स्क्वायर 2 इंटू T. अच्छा ये x स्क्वायर है तो एक x बचेगा डिवाइडेड बाय x. ओके. सो वी गेट दिस वैल्यू. अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेते हैं. सो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. ये वाली. अब इन दोनों को अगर हमें कंपेयर करना है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू जस्ट डिवाइड इक्वेशन 1/2. What we will get? We get as H2 upon H1. H2 upon H1 is equal to, the value is V square 2V square into T. Okay. So this is V square into 2 into T. This is V square into, जो यहाँ पर आया है, you will substitute this value over here. So 2 square V square into T into x. This will be divided by what is the answer for the H? What is the value for H2? H2 is this one, this value which we have taken it as, no, not this one, H1. Yes, the same. Okay. Yes, this one. So what we will substitute? This becomes 2x into V square into 2 into T. अब यहां से आप कैंसिल कर सकते हैं. कैंसिल हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल हो गया, एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद 1/4. All the values are being cancelled and we are only left with H2. I'll just rub it off. H2 by, this is H1 by H2 is equal to 1/4, or H1 ratio H2, it becomes 1:4. So the answer is 1:4. What is the ratio of the heat which is being generated in this particular circuit? Okay, what is the heat being generated?
So what is the heat being generated in this circuit? You can see this now. Okay, fine. So what we have done actually, this we have completed as we have calculated the current for the first part. So we got I1, the value of I1 is V by R, that is V upon 2x. We got the value of R1, that is equal to 2x, and also we got the value for H1, that is equal to I1 square R1 into T. Okay, then after that we will find out, we will simplify this and we get the value as H1 is equal to V square upon 2x into 2x into T. ठीक है, अब उसको आप कैंसिल करके H की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. Now from here we'll find out R2. So we got the answer as we have found the same, the values are being followed in the same manner, and we got the value as H2 is equal to I2 square upon into R2 into T. Okay, we have substituted the value of I2, R2 and T. तो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो H2 जो आएगा हमारे पास, that is V square into 2 square upon x square is into multiplied by x upon 2 into t. So we got it as H2 upon H1. फिर हमें कंपेयर करना है इसका, क्योंकि रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे जब तक कि दो इक्वेशंस हमें नहीं मिलती हैं. So we get the equation as equation number 1 and equation number 2. So equation number 1 and 2, for comparing we need to divide these both. Okay, so we have divided H2 by H1 and we got the answer as 1 upon 4. So the answer is 1:4 ratio is the heat which is being generated in this particular circuit. Okay, I hope now this might be clear for you all. This was a little bit tricky question. Sometimes when the values are not being given, so please find out the value using the same manner as you are doing in your mathematics, where you are finding out the value by substituting it. Okay. Now there are certain applications which is based upon this Joule's law of heating. Now what are those applications? Let us discuss few of them, because some of the applications you might be knowing. So applications of heating effect of electric current. So Joule's law of heating, or we can say that these are the applications of heating effect electric current. Okay, this is known as heating effect of electric current. तो क्या applications हैं? The heating effect of electric current is utilized in the working of electric heating devices such as electric iron, electric kettle, electric toaster, electric oven, electric heaters, geysers. Okay, now all these heating appliances, they have certain coils. What is so common in all these appliances, the names which I have taken, all these, they have heating coil in it. Heating coil in it. Now what is so special regarding this heating coil? This heating coil is made up of a wire which is having a high resistance, and this high resistance is because of this high resistance of the coil is just because of the particular, made up of a particular alloy. This alloy is having, or we can say it is made up of nichrome alloy. And if we talk about this nichrome is this is a very high resistant wire whose value of resistance is very much higher. So it is not allowing the current to pass through that particular circuit, and that is why the extra work done has to be taken. जब friction ज़्यादा होगा तो आप चल नहीं पाते हैं. इसी तरह से same condition होती है, जब रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो करंट भी फ्लो नहीं कर पाएगा, तो करंट एक जगह में रहेगा, and that helps in the conversion of that particular electric current in the form of the heat. वर्क डन तो हो रहा है बट कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है. वर्क डन इज टेकिंग प्लेस, चार्जेस आर मूविंग एंड कमिंग एंड स्टेइंग ओवर हियर, but they are not moving further. But so what happens, work done is happening, but that work done is converted in the form of the energy, and that too in the form of the heat energy. So what is present, I'll just read this out. So based upon these,
certain appliances are being made, like electric heater, it could be bulb, and it could be the fuse. Heater, bulb and fuse. ठीक है? Heater, bulb and fuse. Now, when these appliances are connected to the power supply by insulated copper wire, then the large amount of heat is being produced in the heating coils because they have high resistance, but negligible heat is being produced by connecting the wires of copper, because copper has a very low resistance. For example, heating element or the coil of electric heater made up of nichrome glows because it becomes red hot just because of the large amount of heat is being produced as the electric current is being passed. So we are talking about this nichrome wire, and this has a very high resistance. और अगर बहुत high resistance होगा तो क्या होगा? It is being converted in the form of heat. This energy is being converted in the form of heat. हाई रेसिस्टेंस होने की वजह से ये हीट में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके वजह से वो पूरा जो फिलामेंट है दैट स्टार्ट्स ग्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ द it starts glowing in the form of the very high energy, and this glows in a red hot manner. Okay, now it is being connected with the cable. As it is being connected with the cable, the current starts flowing in this particular device, that is our heater, and it becomes hot. Okay, similarly heating element is present inside electric bulb also. तो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है, अगर आप देखें, अच्छा, अब इफ आई ड्रॉ अ सिंबल ऑफ बल्ब जस्ट लाइक दैट, ठीक है, सो दिस इज मेड अप ऑफ टंगस्टन. ठीक है, टंगस्टन वायर का ये बना होता है, टंगस्टन का बना होता है. इसके अंदर एक इनर्ट गैस भर दी जाती है ताकि फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे और ग्लो करे अच्छे से. गैसेस बर्न करेंगी बट दे आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट, दे विल नॉट शो एनी काइंड ऑफ रिएक्शन. द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज लाइक दिस. व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ वेरी थिन हाई रेसिस्टेंस टंगस्टन फिलामेंट, इसलिए इसको हम बोलते हैं फिलामेंट क्योंकि बहुत थिन है, स्प्रिंग के फॉर्म में इस तरह से. ठीक है, और ये जुड़ा रहता है, एंड दिस इज लाइक द बल्ब. ठीक है, तो इसके अंदर ये जो है, दिस इज coil and this coil is made up of tungsten. अब ऐसा क्या है टंगस्टन के अंदर और क्यों हम टंगस्टन को ही यूज करते हैं? The tungsten filament of the electric bulb produces enormous amount of heat, but almost negligible heat is being produced by connecting wires of copper. तो कॉपर का वायर अगर हम यहाँ लगा देंगे तो कॉपर वायर मेल्ट होकर के टूट जाएगा, it will break the circuit. So we use this tungsten wire which is highly resistant to the heat, and also it starts glowing. That is why what happens, जब ये metal glow करेगा, जब metal burn करेगा, electric current continuously flow कर रहा है और बहुत high resistance है, तो इसका जितना भी work done होगा वो heat energy में convert हो जाएगा और we will get the value as, we will get the heating effect from this bulb. Even light will also be shown because this is made up of glass. The outer covering is of glass. So this fact that fine tungsten filament is very high resistance, whereas a copper wire will be of a very low resistance. Okay, it will be of a very low resistance. Tungsten metal is used for making the filament. It is used for making the filament bulbs because they have a very high melting point. अब अगर वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो जल्दी से मेल्ट भी नहीं करेगा और आराम से बहुत दिनों तक जलेगा भी, क्योंकि अगर मेल्ट करेगा तो ब्रेक होने के चांसेस है इस वायर के. बट दिस टंगस्टन इज हैविंग अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर जाकर के ये वायर मेल्ट करेगा. ओके, जब आप कंटिन्यूसली इस वायर को यूज, इस बल्ब को कंटिन्यूसली ऑन स्विच ऑन कंडीशन में रखेंगे, देन ओनली इट इज गोइंग टू, दिस इज गोइंग टू ग्लो एंड दिस इज गोइंग टू break the circuit if the wire is being melted. Okay, now the next thing what is written over here is
Tungsten metal is used for making the filaments of the electric bulb because it has a very high melting point, due to which high melting point the tungsten filament can be kept white hot without melting away. ठीक है, फिर क्या है, हाई फ्लेक्सिबिलिटी है, लो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, एट हाई टेम्परेचर पे भी. तो ये सारे इसके फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से हम टंगस्टन वायर को यूज करते हैं. ठीक है, सिमिलरली हियर इट इज फिल्ड विद द आर्गन एंड नाइट्रोजन मिक्सचर कभी कभी यूज करते हैं हम ताकि इसकी लाइफ बढ़ सके. ओके चिल्ड्रन, सो दिस वाज अबाउट सम ऑफ द हीटिंग इफेक्ट्स, द एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट. वन ऑफ सच मोर डिवाइस इज दैट फ्यूज. ठीक है, तो फ्यूज में क्या होता है, एक वायर होता है थिन जो कि बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट का वायर है जिसको हम टिन वायर यूज करते हैं. जैसे ही हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आता है इस फ्यूज के अंदर, व्हाट हैपेंस, दिस फ्यूज वायर ब्रेक्स. ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ करंट आएगा, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है तो बहुत लो है इस वायर की, इट ब्रेक्स एंड इट ब्रेक्स द सर्किट ऑफ योर हाउस एंड वी कैन remain safe if high amount of electric current is also coming in our house. Fine. So this was all about the heating effect of electric current, and this chapter is also complete now. We have seen all the facts regarding electricity as well as the heating effect of electric current. So children, this was all about this chapter. I'll be meeting you all in the next video with the next topic to be discussed. Hopefully I'll be starting a new chapter in the next class. That's all for today. Thank you for watching the video.